नमस्सर्वेभ्यः। चतुर्थे विभक्तेः स्पृहेरिप्सितः इति अन्तिमं सूत्रं पठितम्। अधुना अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तं सूत्रं प्रति प्रवर्तयामि। सूत्रमस्ति क्रुधद्रुहेर्षासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इति सूत्रम्। मया पूर्वमेव उक्तं संप्रदानविधायकम् एकं सूत्रं नास्ति, तत्र बहूनि सूत्राणि संप्रदानसंज्ञां तत्र कुर्वन्ति। प्रथमं सूत्रमेव अस्माभिः पठितं कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानं। Thereafter there were a list. Now this is sixth sutram to get sampradana saujnya. What is the sutra? It says krudha, druha, ersha, asuya. In this meaning, if you are using any dhatu, asuya arthanam, krudha arthanam, अथवा कृद अर्थस्य, द्रुह अर्थस्य, ईर्षा अर्थस्य, असूया अर्थस्य कोऽपि धातुः यदि उपयुज्यते, यं प्रति कोपः भवति, यस्मिन् क्रोधः प्रदर्श्यते, सः पुरुषः संप्रदान संज्ञक भवति इत्यर्थः। उदाहरणं किं? हरये क्रुध्यति सः, अथवा सः रावणः क्रुध्यति, रावणः हरये क्रुध्यति. If you are using krud dhatu and you want to express anger on someone, that person is going to get sampradana saujnya. For example, they have given haraye krudhyati, haraye drishyati, haraye irshati. One example only, just different dhatus, right? Very simple. Haraye drishyati. What is the meaning of krodha, droha, irsha and asuya? They have given krodha amarshah, droha apakaraha, irsha akshama, and asuya guneshu dosha avishkaranam iti. Okay, now see one by one. क्रुधादि अर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः उक्तसंज्ञः नाम किं? संप्रदानसंज्ञकः स्यात्. उदाहरणं दीयते, हरये क्रुध्यति, he gets angry on हरि. द्रोह करना मतलब क्या? अपकार करना. अपकार मीन्स टू इंज्योर समवन एल्स. फीलिंग्स हर्ट करना, ऐसे भी हम अर्थ ले सकते द्रोह का. हर्ट करना, द्रोह, इंज्योर करना. असूयति अथवा ईर्ष्यति. ईर्ष्यति मीन्स व्हाट? टू इनवी. तेषां अक्षमा. अक्षमा मीन्स सहन न करना, क्षमा न करना, उसको बोलते हैं ईर्ष्या करना. किसी का दुर्व्यवहार सहन न करना मतलब उसके विषय में हम ईर्ष्या करते हैं, ऐसा उसका अर्थ. असूया. असूया मतलब क्या? असूया मतलब दोषाविष्करणम. इवन सेइंग डिफेक्ट और डिफेक्ट्स इन क्वालिटीज, इन गुड क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड असूया. यदि कश्चन पुरुषः उत्तमः स्यात् किन्तु तत्रापि तस्मिन्नपि दोषदर्शनं यदि क्रियते तदा सा क्रिया असूया इति उच्यते. अस्तु, एतावता स्पष्टम्. असूयति एतावता. यं प्रतिकोपः किं? तस्य कृते एकम् उदाहरणं दीयते, किन्तु तस्मात् प्राक् क्रोधः किं, द्रोहः किं, तेषां विषये किञ्चित् पश्यामः. क्रोधः नाम अमर्षः. मीन्स व्हाट? कोपः इज वेरी कॉमन स्टेटमेंट. कोपः मीन्स just anger which stays for moment. Momentary anger is called kopa. But that same kopa, if it stays for long time, is called krodha. So there is little difference. Kopa is common statement, common word for anger,
but that anger, if it stays a long time, for a long time, that same kopa is called krodha. Extended anger is called krodha, right? What about droha? Droha nama, harming someone is called droha. अपकार, अपकार करना, हार्म करना किसी को, हर्ट करना किसी को, उसको बोलते द्रोह. ईर्षा नाम किम? ईर्षा अक्षमा. अक्षमा नाम किम? असहनम, नॉट टॉलरेंट. असूया, असूया नाम गुणेषु दोषाविष्करणम, फाइंडिंग फॉल्ट्स इवन इन गुड क्वालिटीज. सिंपल. Okay, now all these four kind of qualities, not qualities, what we should, इनको क्या बोलते हैं? अमर, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, negative qualities we should say. Negative qualities are arising from kopa. Kopa is a base. Kopa is becoming base for all these qualities. Krodha, droha, irsha and asuya. So that's how they say druhadayah api kopa prabhava eva, kopa prabhavaha eva grihyante. All these qualities are arising from kopa. That's how they are putting a word yam prati kopah. Otherwise they would have said yam prati krodha, yam prati droha, yam prati irsha, yam prati asuya. But Sutrakar is just putting a word yam prati kopah. Kopa word he is putting to show all these negative qualities arise, or base for those qualities is kopa. तो जिसके प्रति कोप रहेगा, द्रोह रहेगा, असूया रहेगी, ईर्ष्या रहेगी, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी. अतः विशेषणं सामान्येन यम प्रति कोपः विशेषेण भवेत् उत सामान्येन भवेत्. यस्य प्रतिकोपः भवति, यम प्रतिकोपः भवति, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति इत्यर्थः. अधुना वाक्यं पश्यामः. यदि सूत्रे यम प्रतिकोपः इति शब्दः न प्रयुज्यते चेत् का हानि? If we do not put the word yam prati, what will happen? They give another prati udaharanam. Bharyam irshati. Patihi bharyam irshati. Here, even though irshati word is being used, but he doesn't have anger or feelings of anger towards wife. He has feelings of anger for someone else, that my wife should not be seen by someone else, or he should not look at my wife. तो अपनी पत्नी के प्रति एंगर नहीं है. यदि पत्नी के प्रति एंगर नहीं है तो पत्नी में संप्रदान, पत्नी की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी. तो उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया, पति ही भार्याम ईर्षति. ईर्ष्या करता है लेकिन भार्या के प्रति कोप नहीं है, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है. जिसके प्रति कोप रहेगा, जिसके प्रति ईर्ष्या रहेगी, उस व्यक्ति की चतुर्थी विभक्ति होने वाली है, उसकी संप्रदान संज्ञा होने वाली है कि नहीं. तो उदाहरण उन्होंने वही एक्सटेंड किया. मा एनाम अन्यः द्राक्षित इति. अन्यः एनाम, माम मम पत्नीम नाम एनाम मा द्राक्षित इति अर्थः. मेरी पत्नी को कोई और ना देखे, मतलब यदि कोई और देख रहा है तो उसके प्रति मेरी क्या होगी? ईर्ष्या होगी. तो उस व्यक्ति की चतुर्थी विभक्ति रहेगी, पत्नी की न, है कि नहीं. तो उन्होंने वैसा उदाहरण दिया. भार्याम ईर्ष्यति, भार्या के प्रति उसका क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है, यद्यपि उन्होंने ईर्ष्यति क्रियापद यूज किया है. तो यहाँ भार्या की चतुर्थी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भार्या के प्रति नहीं है कोप. कोप है उसको, ईर्ष्या भी है, लेकिन भार्या के प्रति नहीं है. जिसके प्रति होगी उसकी चतुर्थी होगी. इज दैट क्लियर? वही एक्सटेंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एनाम भार्याम अन्यः मा द्राक्षेत न पश्येत कोपि माम मम भार्याम न पश्येत इत्यर्थः. यदि कश्चन पश्यति चेत
तस्य पुरुषस्य चतुर्थी विभक्ति भविष्यति, यतोहि तम प्रति कोपः वर्तते। इतना स्पष्ट हुआ। यदि इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। नहीं है किसी को कुछ पूछना? ठीक। अगला उसका ही कंटिन्यू करते हैं। कृद्यति, कृद्यति ये द्विवादिगण का धातु है, चतुर्थ गण का। षण विकरण लगता है, यकार उसमें अवशिष्ट रहता है, तो कृद्यति ऐसा रूप बनेगा। टू गेट एंग्री, टू बी एंग्री। द्रोह नाम किम, टू इंज्योर। ईर्षति ये शप भुआदिगण का प्रथम गण का धातु है, टू इनवी। सॉरी, द्रुह, द्रुह्यति, द्रुह्यति धातु भी द्विवादिगण का ही यकार लगा है वहां। हाँ, क्षम्यताम। द्रुह धातु चतुर्थ गण द्विवादिगण षण विकरणम। ठीक है। ईर्षति धातु भुआदिगण का है, शप विकरण वहां लगा है। ईर्षति, ईर्ष ऐसा ही धातु है, वहां मेन रूट में ही यकार लगा के करते हो। और असूयति वहां एक कंडवादी गण रहेगा, वहां बहुत सारे शब्द इंक्लूड करेंगे वो, तो असूया, असूयति ऐसा एक धातु भी उस गण में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके। सो हरये कृद्यति, हरिम प्रति कोपः अस्ति। हरि तत्र क्रोधस्य अधिष्ठानम अस्ति इति कृत्वा तस्य संप्रदान संज्ञा। हरि के प्रति कोप है, क्रोध है, इसलिए हरि की संप्रदान संज्ञा हो गई। हरये द्रुह्यति, हरि विषयक अपकारकम करोति। हरेः अपकारम यदि करोति तदा तस्य संप्रदान संज्ञा। इफ ही इज हर्टिंग हरि, हार्मिंग हरि, संप्रदान संज्ञा। ईर्षति असहनम, he is not able to tolerance Hari. Asuya, even Hari is good, but Asura or Rakshasa doesn't see him as Gunavan. They always see something else in Hari. So Asuyati, Ravanah Ramam Asuyati, Ramaya Asuyati, Kshamyatam. Okay. Another sutra now. Krudadruho Rupasrushtayah Karma. Krudadruha, those two dhatus are taken if those two dhatus are endowed with upasarga. Which upasarga? Abhi upasarga let's take. सूत्रार्थः एवम् अस्ति, अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा न क्रियते, अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा क्रियते. So you have to put this sutra into कर्म प्रकरण. But because kruha and druha dhatu was explained in last sutra, that's how they are taking. Even you can do karma saudhnya along with kruda dhatu and druha dhatu if those two dhatus are endowed with abhi upasarga. There you cannot do sampradana, there you have to do karma saudhnya. That's how it becomes apavada. Okay. Sopasargayoho, sopasargayo naam, sopasarga means what? उपसर्गेन सहितः सोपसर्गः. उपसर्गयोः, सोपसर्गयोः, अनयोः, अनयोः कृदद्रुहयोः. If कृद and द्रुह is endowed with उपसर्ग, then यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप है उसकी कर्म संज्ञा होगी, न तो संप्रदान संज्ञा. उतना थोड़ा सा डिफरेंस है. उदाहरण देते हैं, क्रूरम अभिकृद्यति, है ना. कृद्यति धातु यूज हुआ है यहां. एक्चुअली केवल कृद्यति रूप होता तो वहां क्रूराय कृद्यति ऐसा सेंटेंस बनता, लेकिन कृद धातु के साथ यदि आप उपसर्ग यूज कर रहे हो तो वहां आप जिसके प्रति कोप है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे, उनकी कर्म संज्ञा करेंगे. राइट. सो इट बिकम्स सह क्रूरम अभिकृद्यति, he gets angry on क्रूर, a cruel person, on cruel person. Similarly, सह क्रूरम अभिद्रुह्यति, अभिद्रोह उसका भी अर्थ वही है. द्रोह करना मतलब अपकार करना, हार्म करना, ठीक है ना. और गेटिंग एंग्री, दैट्स इट. सिंपल ना. Shall I move to next? अरादिक्षोर यस्य विप्रश्नः, इदं सप्तमं सूत्रम्.
there is a dhatu radh and iksha. Both have same meaning, to asking about someone. Asking about. ओके, एतयोः सूत्रार्थः एवम् अस्ति। एतयोः नाम राध इक्षोः, राधिक्षोः, राध धातु एंड ईक्ष धातु। एतयोः कारकं संप्रदानं स्यात्, एतयोः संप्रदान कारकं स्यात् इति अर्थः। यस्य विषये प्रश्नः क्रियते तस्य चतुर्थी विभक्ति। उदाहरणं तैः दीयते, कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते, मीन्स व्हाट? आस्किंग अबाउट कृष्ण. When he was born, that time there was a priest, you know, Gargaha, I guess. Gargaha was asked by Yashoda Maya, I guess, that what is the future of my little Kanha. And that time regarding Krishna there was a question. So यदि यह विविधः प्रश्नः क्रियते, यस्मिन् विषये विविधः प्रश्नः क्रियते, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। कृष्ण विषयक प्रश्नः भवति इति कृत्वा कृष्ण इति पदस्य संप्रदान संज्ञा। कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते, बोथ हैव सेम मीनिंग। अबाउट कृष्ण, आस्किंग अबाउट कृष्ण। तो अग्रे एव प्रदत्तं वर्तते, पृष्टः गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः। गर्गः वाज आस्क्ड, then Garga says shubhashubham paryalochayati ityartah. What is shubha, what is ashubha? He was saying that, or saying that, both way. Radha samsiddhau iksha darshane ihatu ubhayoho dhatvoho prashna vishayak shubhashubha paryalochanam ityartah. So regarding Krishna, there are some questions whether what is good about Krishna, what is bad about Krishna. Shubha Shubha Paryalochanam is called Samsiddha. For that we can use Radha Dhatu or Iksha Dhatu. Viprashnaha nama kim? Hold on. What is Paryalochaya means? Paritah Alochanam, looking at. Alochanam matlab avalokanam. So looking what is good, what is bad for Krishna. विप्रश्नः नाम विविधः प्रश्न, वेरियस क्वेश्चन अबाउट कृष्ण। ओके, ठीक है, ये भी ठीक था। आज के दिन बहुत ज्यादा सूत्र हो जाएंगे, सिंपल सिंपल ही चल रहा है। ये वाला हम अगली कक्षा में देखते हैं, है कि नहीं? इसके रिगार्डिंग जितने भी हुए उनके रिगार्डिंग कुछ है पूछना तो पूछिएगा। 8 ऑलरेडी बज गए हैं। 1 घंटे से ज्यादा यदि कक्षा लेते हैं तो थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन जी कुछ I have a sentence I made for Shlaghate. I don't know if that makes sense. I wrote that Balika Pachana Samarthyam Matre Shlaghate. Matre Shlaghate. She wants to convey her expertise. She wants to express, right, to mother. So you can make Matre Shlaghate. How do I say? She wants to tell her mother that she's a good singer. How do I say that? Balika Ganam Matre Shlaghate or something. Gatum Ganam Gatum. हाँ, अहम गानम गातुम समर्था इति कृत्वा सः बालिका गान विषये श्लाघते। कस्यै श्लाघते? मात्रे श्लाघते अथवा पित्रे श्लाघते, यू कैन से दैट। गान विषये मात्रे श्लाघते, जिसको वो कन्वे कर रही है उनकी चतुर्थी होगी, उतना ही। And for the rochate, I wrote Naryai Abharanani rochate.
Abharanani Already is plural. forgot. So rochante you should say. Rochante. हाँ Rochante. समीचीनं. नार्यै or नारीभ्यः you should say. बहुवचनं we can use. नारीभ्यः आभरणानि रोचन्ते. Isn't it? Yeah, not just one nari. And can I say Shishave Dugdham Rochate? शिशवे दुग्धं रोचते. He cannot live without. Right? Yes. And Vanaraya Phalam Rochate. Vanaraya phalam rochate. Samichinam. So now whenever you are making these sentences, you have to understand even karta also. Huh? Who is karta in this sentence? Phalam is becoming karta. Even abhushanani are kartru padani. Even Dugdham is No, dugdham, Kartru. whatever you are making sentence, if somebody is liking that liked object is getting kartru samanya. Abhushanani rochante, dugdham rochate. Right. Anything else? No? Done. बाकी कुछ सेंटेंस वगैरह. So we will have class on Monday, right? I will let you know if ticket you will is share. confirm. I will leave today itself. Otherwise, I will let you know. Okay. ठीक आहे. तुम्हाला हा, शुभेच्छा convey- सर आणि आमचा पण नमस्कार पोचवा तिकडे. Yeah, convey our pranams to Gnaneshwar Father also. Yes, definitely. Okay. Om पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओम. We'll see you. श्री गुरुवे नमः. Hari Om. Happy journeys. धन्यवादः.